जी आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 105 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 105 क्या पूछ रहे हैं? ट्रू अबाउट हेपेटाइटिस ए इंक्लूड। ट्रू अबाउट हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए क्या क्या होती है? ऑप्शन 1, वायरस इज डिस्ट्रॉयड बाय बॉइलिंग फॉर 5 मिनट्स। तो वायरस डिस्ट्रॉयड by boiling for 5 minutes. Option 2, spreads by fecal-oral route. Spread by fecal-oral route. Option 3, incubation period is 45 to 180 days. Incubation period is 45 to 180 days. Option 4, predisposed to cirrhosis, is risk factor for cirrhosis. And option 5, IgG anti-HIV antibodies used for diagnosis. Diagnosis by IgG anti-HIV antibody. फिर से देखिए, ट्रू अबाउट हेपेटाइटिस ए, वायरस इज डिस्ट्रॉयड बाय बॉइलिंग फॉर 5 मिनट, स्प्रेड बाय fecal-oral route, incubation period is 45 to 180 days, risk factor for cirrhosis, या diagnosed by IgG anti-HIV antibody. And the right answer is A and B. The virus is destroyed by boiling for 5 minutes and spread by fecal-oral route. Hepatitis A virus destroyed by boiling for 5 minutes and spread by fecal-oral route. Question number 106 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 106, सीवियरिटी ऑफ मिट्रल स्टेनोसिस जज्ड बाय। ठीक है ना, सीवियरिटी ऑफ मिट्रल स्टेनोसिस इज जज्ड बाय ऑप्शन 1, loudest one. Option 2, S2OS gap. Option 2, S2OS gap. Option 3, prolonged diastolic murmur. Option 3, prolonged diastolic murmur. Option 4, S3 sound. Option 5, S4 sound. Option 5, S4 sound. फिर से देखिए, सीवियरिटी ऑफ MS इज जज्ड बाय लाउडेस्ट वन, S2OS गैप, प्रोलॉन्ग डायस्टोलिक मर्मर, S3 साउंड या S4 साउंड. एंड द राइट आंसर इज B and C. That is S2OS gap and prolonged diastolic murmur. Severity of MS is judged by S2OS gap and prolonged diastolic murmur. क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 107 क्या पूछ रहे हैं? पेरिफेरल पल्मोनरी स्टेनोसिस इज एसोसिएटेड विथ। पेरिफेरल pulmonary stenosis is associated with. Peripheral pulmonary stenosis is associated with. Option 1, subaortic stenosis. Option 1, subaortic stenosis. Option 2, Takayasu arteritis. Option 2, Takayasu arteritis. Option 3, Williams syndrome. Option 3, Williams syndrome. Option 4, coarctation of aorta. Option 4, coarctation of aorta. या option 5, rubella. Option 5, rubella. फिर देखिए, पेरिफेरल PSC is associated with subaortic stenosis, Takayasu arteritis, Williams syndrome, coarctation of aorta या rubella. And the right answer is C and E. That is with Williams syndrome and rubella. Peripheral pulmonary stenosis is associated with Williams syndrome and rubella. क्वेश्चन नंबर 108 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 108 क्या पूछ रहे हैं? मैसिव स्प्लेनोमेगाली सीन इन। मैसिव स्प्लेनोमेगाली is seen in. Option 1, Gaucher disease. Option 1, Gaucher disease. Option 2, chronic Kala-Azar. Option 2, chronic Kala-Azar. Option 3, CML. Option 3, CML. Option 4,
myelodysplasia, option 4 myelodysplasia, या option 5 splenic infarct, option 5 splenic infarct। फिर से देखिए, मैसिव स्प्लेनोमेगाली सीन इन गॉशर डिजीज, क्रॉनिक कालाजार, क्रॉनिक CML, माइलोडिस्प्लासिया या फिर स्प्लेनिक इन्फार्क्ट। एंड द राइट आंसर इज A, B and C, A, B and C। ठीक है, मैसिव स्प्लेनोमेगाली सीन इन गॉशर डिजीज, क्रॉनिक कालाजार एंड CML, मैसिव स्प्लेनोमेगाली सीन इन गॉशर डिजीज, क्रॉनिक कालाजार एंड CML। क्वेश्चन नंबर 109 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 109, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इज इंडिकेटेड इन, bone marrow transplantation is done in option 1 osteopetrosis, option 2 hemophilia, option 2 hemophilia, option 3 mucopolysaccharidosis, option 4 ineffective erythropoiesis, and option 5 Diamond-Blackfan syndrome, Diamond-Blackfan syndrome। फिर से देखिए, बोन मैरो ट्रांसप्लांट इज डन इन ऑस्टियोपेट्रोसिस, हेमोफिलिया, माइलोप्रोलिफरेटिव म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस, इनएफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस या फिर डायमंड ब्लैकफैन सिंड्रोम। एंड द राइट आंसर इज A, C and E, A, C and E। That is in osteopetrosis, mucopolysaccharidosis and Diamond-Blackfan syndrome. Bone marrow transplant is done in osteopetrosis, mucopolysaccharidosis and Diamond-Blackfan syndrome। Question number 110 देखेंगे। Question number 110, find the correct match। करेक्ट मैच हम लोग को चुन के बताना होगा। ऑप्शन 1 क्या बोल रहे हैं, आनका इज फाउंड इन टाकायाशु आर्टेराइटिस, आनका इज फाउंड इन टाकायाशु आर्टेराइटिस। ऑप्शन 2 एंटी-हिस्टोन एंटीबॉडी सीन इन SLE न्यूबॉर्न, एंटी-हिस्टोन antibody is seen in SLE in newborn। Option 3 naproxen is for causes pseudoporphyria, naproxen causes pseudoporphyria। Option 4 anti-mitochondrial antibodies are seen in primary biliary cirrhosis, anti-mitochondrial antibody is seen in primary biliary cirrhosis, PBC। ठीक है ना। इसमें फिर से देखिए, फाइंड द करेक्ट मैच। Anca is present in Takayasu arteritis, anti-histamine antibody seen in SLE in newborn, naproxen seen in pseudoporphyria, anti-mitochondrial antibody seen in primary biliary cirrhosis। And the correct answer is C and D। That is, naproxen is seen in pseudoporphyria and anti-mitochondrial antibody seen in primary biliary cirrhosis। These are the correct statements। Question number 111 देखेंगे। Question number 111, ठीक है ना। A female present with history of rash and polyarthritis, it may be associated with, the female with history of rash and polyarthritis may be associated with option 1 ANA, option 2 RA factor, option 2 RA factor, option 3 bad obstetric history, option 3 bad obstetric history, option 4 increase APTT, option 5 HLA-B27। फिर से देखिए,
female with history of rash and polyarthritis is associated with ANA, rheumatic RA factor, bad obstetric history, increased APDT या HLA-B27. And the right answer is A, B, C, D. A, B, C and D. That is with ANA, RA factor, bad obstetric history and increased APDT. ये सब कुछ मिल रही होगी इस कंडीशन में, रैश विथ पॉलीआर्थराइटिस. क्वेश्चन नंबर 112 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 112 क्या पूछ रहे हैं? ट्रू अबाउट गाउट इज. ट्रू अबाउट गाउट. ट्रू अबाउट गाउट. ऑप्शन 1 occurs due to accumulation of urate crystal in joint. That is increase urate crystal in joint. In joint. Option 2 can be precipitated by pyrazinamide. Is precipitated means increased by pyrazinamide. Pyrazinamide. Option 3 birefringent crystal are present in joint. Birefringent crystal present in joint. Present in joint. Option 4 occurs more in females. More in females than males. More in females than males. Option 5 due to decreased excretion of uric acid. There is decreased excretion of uric acid. Decreased excretion of uric acid. True about gout. There is increased urate crystal in joint. Increased by precipitated by pyrazinamide. Birefringent crystal present in joint. More in females than in males. Increased excretion of uric acid. And the right answers are A, B, C and E. ठीक है ना? A, B, C and E. है तो गाउट जो होती है there is increased urate crystal in joint. Precipitated by pyrazinamide. Birefringent crystals are present in the joint and there is decreased excretion of uric acid. क्वेश्चन नंबर 113 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 113. ठीक है ना? पैनसाइटोपेनिया इज सीन इन. पैनसाइटोपेनिया is seen in. Option 1 aplastic anemia. Aplastic anemia. Option 2 megaloblastic anemia. Megaloblastic anemia. Option 3 myelofibrosis. Myelofibrosis. Option 4 myelodysplasia. Myelodysplasia. Option 5 Diamond-Blackfan syndrome. Diamond-Blackfan syndrome. फिर से देखिए पैनसाइटोपेनिया seen in aplastic anemia, megaloblastic anemia, myelofibrosis, myelodysplasia, Diamond-Blackfan syndrome. And the right answer is A, B, C, D. ठीक है ना? A, B, C, D. बस Diamond-Blackfan syndrome पैनसाइटोपेनिया नहीं मिलती है, लेकिन एप्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, माइलोफाइब्रोसिस, माइलोडिस्प्लासिया सब में पैनसाइटोपेनिया मिल रही होती है. क्वेश्चन नंबर 114 देखेंगे. IV immunoglobulin is used in. IV immunoglobulin is used for. Option 1 myasthenia gravis. Option 2 ITP. Option 3 Takayasu arteritis. Option 4 hemolytic uremic syndrome. Option 5 multiple myeloma. वैसे देखिए IV immunoglobulin is used for myasthenia gravis, ITP, Takayasu arteritis, HUS या multiple myeloma. And the right answer is A and B. That is in myasthenia gravis and ITP. IV immunoglobulin is used for myasthenia gravis and ITP. क्वेश्चन नंबर 115 देखेंगे. Cause of hemoptysis are. ठीक है? Cause of hemoptysis. Option 1 mitral stenosis. Option 2 bronchogenic carcinoma. Option 3 bronchiectasis. या ऑप्शन 4 निमोनिया. फिर से देखिए कॉज ऑफ हिमोप्टाइसिस, मल्टीपल मिट्रल स्टेनोसिस, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, ब्रोंकिएक्टाइसिस या निमोनिया. एंड द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव.
आज के लिए इतना ही, थैंक यू।